मेरे प्यारे students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing questions on modulus that have appeared in IPMAT examination. Start करते हैं session. And if you're not already subscribed to the YouTube channel, make sure to subscribe to the channel. Also press the bell icon. And you can also message me on Telegram at ADITYAKT. So basically, mod of x is defined as equal to plus x or x if x is a positive और नॉन नेगेटिव क्वांटिटी. x पॉजिटिव होगा तो भी दिस इज इक्वल टू x, एंड इफ x इज इक्वल टू 0 देन ऑल्सो दैट इज इक्वल टू x, एंड mod of x is equal to minus x if x is negative. This is the basic definition of modulus. Okay, so mod of x or modulus of x, that is always greater than or equal to 0 irrespective of whether x is positive or negative or equal to 0. Isn't it so? ठीक है. सो जनरली डेफिनेशन हम क्या देख रहे हैं जब भी mod of x की बात करें, so mod of x is simply modulus of x minus 0 और डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0. अगर नंबर लाइन पे हम ड्रॉ करें, so distance of x from 0. For example, if x is equal to 1, so distance of 1 from 0, this is equal to 1. That is why mod of 1 is equal to 1. If x is equal to minus 2, so distance of minus 2 from 0, that is equal to 2. So mod of minus 2 minus 0 or mod of minus 2, that is equal to 2. ओके, तो डिस्टेंस अप्रोच से समझेंगे मॉड को तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को. सो फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर minus 10 टाइम्स mod of x minus 56 is equal to 0. नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर minus 10 टाइम्स mod of x और minus 56 is equal to 0. ठीक है. सो दो तरीके हैं. एक तो हम डायरेक्टली ये सोच सकते हैं कि mod of x कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, mod of x हमारा x से पॉजिटिव होगा तो ओपन होगा विद द पॉजिटिव साइन, नेगेटिव होगा तो ओपन होगा विद द नेगेटिव साइन. तो दो केसेस ले सकते हैं. x कैन बी greater than or equal to 0 and x less than 0. So if x is greater than or equal to 0, so equation will be x square minus 10 into x, because mod of x will be equal to x, minus 56, this is equal to 0. Okay, so sum is equal to 10, product is equal to minus 56. क्या वैल्यूज होगा 14 and minus 4. x will be equal to 14 and minus 4. ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा x minus 14 into x plus 4 is equal to 0 और वहाँ से रिजल्ट आया हमारा x is equal to 14 and minus 4 because sum is equal to 10, सम माइनस भी हुआ. ठीक है, और डिवाइड बाई क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, सो सम इज इक्वल टू माइनस बी विच इज इक्वल टू 10 और प्रोडक्ट आ गया हमारा माइनस 56. तो दैट इज वाई 14 एंड माइनस 4 में ब्रेक कर दिया हमारा x कैन बी 14 एंड माइनस 4. नाउ हमने ओरिजिनली ही कहा है कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दिस वाज अवर इनिशियल एजम्पशन. उसके बाद ही हमारा इक्वेशन कन्वर्ट हुआ इन एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 56 इक्वल टू 0. सो x हैज टू बी अ पॉजिटिव वैल्यू और अ जीरो वैल्यू. तो डेफिनेटली x इक्वल टू 14 एक्सेप्ट होगा बट माइनस 4 एक्सेप्ट नहीं होगा. दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन दिस केस. सेकंड सिनेरियो, x लेस देन 0. So this will be x square minus 10 into minus x minus 56 equal to 0. So x square plus 10x minus 56 equal to 0. So यहाँ पे x की वैल्यूज हमें क्या मिलेगी? x can be equal to, x will be equal to 4 and minus 14. Okay, 4 and minus 14. So x less than 0 is our initial assumption. यानी कि x equal to minus 14 तो एक्सेप्ट हो जाएगा बट x equal to 4 एक्सेप्ट नहीं होगा. Okay. So there are two solutions, x is equal to 14 and minus 14. Option D will be the answer. Number of real solutions will be equal to 2. Okay, clear है बात. ठीक है, सेकंड अप्रोच क्या हो सकता था कि if mod of x, in this case let us assume कि mod of x is equal to t. So since mod of x is always positive, so mod of x whole square क्या होगा? This is same as equal to x square, because if x is positive or non-negative, in that case mod of x will be x, so this will be anyway x square. If x is negative, then this will be minus x whole square, which is also x square only. So mod of x square is same as x square. So if mod of x is equal to t, so t square will be equal to x square. So this equation can be written as t square minus 10t minus 56, this is equal to 0, which becomes t square minus 14t plus 4t minus 56 equal to 0. Make it t minus 14 into t plus 4, this is equal to 0. So either t is equal to 14 or minus 4. But t actual में क्या है? t is equal to modulus of x.
So t has to be definitely greater than equal to 0. So t must be greater than equal to 0. So can be 14, cannot be minus 4. So mod of x equal to 14 solution आ गया, यानी कि x will be equal to plus minus 14, क्योंकि हमें चाहिए number of real solutions. Okay. Option D आंसर आ जाएगा, which is equal to 2. क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है. सो आवर आंसर विल बी 2 solutions in total. Next question. If mod of x plus 1 plus y plus 2 whole square is equal to 0 and ax minus 3ay is equal to 1, then value of a क्या होगा. अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं x and y in the first equation as well as in the second equation, and modulus of x plus 1 plus y plus 2 whole square is given as equal to 0. अब modulus of x हो, modulus of x plus 1 हो, modulus of x plus 10 हो, कोई भी वैल्यू हो, any modulus is always greater than equal to 0. Similarly, y plus 2 whole square, this is also a perfect square. So being a perfect square, this will also be greater than equal to 0. So both values are non-negative. दोनों ही या तो 0 होंगे या फिर पॉजिटिव वैल्यू होंगे, और दोनों का सम हमें 0 गिवन है. So if there are two values which are non-negative और उनका सम हमें 0 गिवन है, that implies कि both values must be 0. बिकॉज अगर एक भी वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी, दूसरे को नेगेटिव होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है. सो बोथ मस्ट बी 0. बोथ मस्ट बी 0. और जैसे ही दोनों को 0 कर देंगे तो सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा कि mod ऑफ x plus 1 this is equal to 0. Okay, so x will be equal to minus 1 because then x plus 1 has to be equal to 0. So x is equal to minus 1 आ जाएगा. Second scenario, y plus 2 whole square, this is 0. So this implies y plus 2 must be 0 and hence y must be equal to minus 2. X is equal to minus 1 and y is equal to minus 2. आ गया हमारा. Now put these values in the second equation. Ax minus 3ay is equal to 1. So a into x will be a into minus 1, minus 3a into y, y is equal to minus 2, and this is equal to 1. So minus a plus 6a is equal to 5a, and 5a is equal to 1, and hence a is equal to 1 upon 5. A equal to आ गया 1 upon 5. Option A is the answer. Is this clear? ठीक है. Next question. The minimum value of fx is equal to minus mod of 3 minus x plus mod of x plus 2 plus mod of 5 minus x. Mod of 3 minus x plus mod of x plus 2 plus mod of 5 minus x. अब mod के अंदर पे a लिखो तो सेम वैल्यू देगा, रिजल्ट देगा. ठीक है. mod के अंदर a मेंशन हो तो भी वैल्यू हमारा क्या आएगा, इफ a इज पॉजिटिव तो a ही आएगा. ठीक है. और mod के अंदर माइनस a मेंशन हो तब भी रिजल्ट सेम आएगा. तो mod of a इज इक्वल टू mod of minus a. तो mod के अंदर माइनस साइन का एडजस्टमेंट हमेशा हम कर सकते हैं. सो वी कैन राइट fx इज इक्वल टू mod of 3 minus x है, यानी कि 3 और x के बीच का डिस्टेंस है इफेक्टिवली. सो दिस कैन बी रिटन mod of x minus 3 प्लस mod of x plus 2 और प्लस mod of 5 minus x, यानी कि x और 5 के बीच का डिस्टेंस प्लस mod of x minus 5. सो यहाँ पे वी हैव 3 mods. mod of x minus 3 यानी कि डिस्टेंस ऑफ x एंड 3. तो 3 इज द क्रिटिकल पॉइंट फॉर द फर्स्ट मॉड्यूलस. देन वी हैव mod of x plus 2 which is distance of x from minus 2. This is basically x minus minus 2. So distance of x and minus 2. So minus 2 is the second critical point, and the third modulus, that is mod of x minus 5. So distance of x from 5. Okay. So you have to sum distances of x from minus 2, from 3 and 5, and we have to find out what will be minimum value. What will be minimum value in this case? तो पहले थोड़ा सा जनरल तरीके से सॉल्व करते हैं, फिर बाद में अपना जो शॉर्टर अप्रोच है, जो अप्रोच है जिससे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, उसको समझेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट केस कुड भी कि हम सारे के सारे मॉडल्स को ओपन करने की कोशिश करें. एंड सिंस देयर आर 3 क्रिटिकल पॉइंट्स -2, 3 एंड 5, जिन पे कि हमारा मॉड पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा या नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, ये डिपेंड करेगा. तो दैट इज वाई वी विल बी टेकिंग 4 केसेस इन टोटल. फर्स्ट केस विल बी दैट x is less than -2. Okay, so if x is less than -2, in that case all the modulus will be opening with a negative sign. So fx will be equal to mod of x minus 3 open होगा negative sign के साथ, तो this will be 3 minus x plus x plus 2 will also open with the negative sign, यानी कि minus x minus 2. 5 minus x minus 5 will also open with a negative sign, so this will be minus x plus 5. So effectively this will be 3 minus 2 plus 5, यानी 8 minus 2 6 minus 3x. Okay. Next case, x is between -2 and 3.
So mod of x plus 2 will be opening with the positive sign because x is now greater than minus 2. बाकी सारे के सारे rest of the modulus will open with a negative sign. So 3 minus x plus x plus 2 minus x plus 5. So x and minus x will get cancelled out. This will be 5 plus 2 plus 3. So 10 minus x. Third scenario, when x is between 3 and 5, so 3 is less than or equal to x less than 5. In that case, two modulus will be opening with a positive sign, which is mod of x minus 3 and mod of x plus 2. So x minus 3 plus x plus 2 minus x plus 5 will be equal to 5 plus 2, 7 minus 3, yani 4 plus x. Okay, the last case, when x is greater than or equal to 5, so all modulus will be opening with a positive sign. This will be x minus 3 plus x plus 2 plus x minus 5. So this will be 3x minus 8 plus 2 minus 6. 3x minus 6. And we have to find out minimum value of the function. So for 6 minus 3x, since x is less than minus 2, ठीक है, so हमारा we are subtracting 3x from it, isn't it? So x is less than minus 2. तो हमारा 6 minus 3x क्या होगा? This will be increasing because x negative है और हम x subtract कर रहे हैं. So minimum value will be when x is equal to minus 2. x equal to minus 2 put करोगे तो value क्या आएगा? x equal to minus 2 पे this will be 6 minus 3 into minus 2. So 6 plus 6, this will be equal to 12. 12. And 6 minus 3x will be greater than 12. This will be greater than 12 because at x equal to minus 2, this will be equal to 12. Isn't it so? Otherwise, this will be greater than 12. Second scenario, when x is between minus 2 and 3, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा? At minus 2. Minus 2 वैल्यू आएगा 12. ठीक है, this will be equal to 12 at minus 2. और 3 पे वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 पे this will be 7. 7. So 10 minus x, this will be between 12 and 7. Okay. Equality at 12 because 12 वैल्यू आ रहा है हमारा x equal to minus 2 पे और inequality at 7. Third case, when x is between 3 and 5, so at 3 वैल्यू क्या आएगा? 3 plus 4 7. 5 पे क्या आएगा? 5 plus 4 9 आएगा. 9 आएगा. So 4 plus x is between 7 and 9. Equality at 7. 7 less than or equal to 4 plus x less than 9. यानी कि पहले वैल्यू हमारा क्या था? When x is less than minus 2, so our function is greater than 12. Between minus 2 and 3, function आ रहा है 12 से 7 के बीच में, यानी कि डिक्रीज कर रहा है. बट आफ्टर 3 and 5 अगेन फंक्शन हमारा इंक्रीज करना चालू कर दिया, यानी कि द मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है? एट x equal to 3 and that value is equal to 7. ठीक है, अभी लास्ट में देखा नहीं है बट लास्ट में भी देखेंगे, कहानी सेम ही आएगा. 3x minus 6 है. अब x equal to 5 पे वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा? x equal to 5 पे दिस वैल्यू विल बी 5 3 दैट 15 minus 6 दैट इज इक्वल टू 9. और फिर इसके बाद में फिर ये फर्दर इंक्रीज ही करेगा. ठीक है, इंक्रीज ही करेगा क्योंकि हमारा 3x ऐड हो रहा है. तो 3x minus 6 इज greater than 9. Is that clear? So minimum value is equal to 7 and that value is at x is equal to 3. Okay, but this is the very long approach to solve such a question. एग्जाम में बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं देना है. स्ट्रेट अवे हमें क्या करना है कि डिस्टेंस अप्रोच फॉलो करना है. सो वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम -2, 3 and 5. Distance of x from all these values. Okay, and we have to minimize that sum of distances. So for example, अगर if x is at this point, ठीक है, let us say x is a person. So if x is at this point, this is equal to x. So we have to sum the distances of x from -2, from 3 and 5. So this will be first distance, this will be second distance, and this will be third distance. Now if x is less than -2, तो जितना -2 से दूर जाता जाएगा डिस्टेंसेस बढ़ती जाएंगी क्योंकि सम ऑफ डिस्टेंसेस ऐड होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा. इसंट इट सो? अगर ये और फर्दर आगे जाएगा so ये डिस्टेंसेस सारी की सारी डिस्टेंसेस इंक्रीज होंगी. So that is why distance will be increasing as x is less than -2. क्या ये इमेजिन कर पा रहे हो? ठीक है, x को समझो एक पर्सन है और पर्सन -2 से जैसे जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे जाता जाएगा डिस्टेंसेस इंक्रीज करती जाएंगी, तो हमारा fx का वैल्यू इंक्रीज करेगा. isn't it so? हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू, तो यानी कि हमें उस डायरेक्शन में जाना ही नहीं है. अब -2 से 3 के बीच में आता है x,
सो इन दैट केस क्या वैल्यूज आएंगी डिस्टेंसेस की? Distance from -2 will be this value, distance from 3 will be this value, and distance from 5 will be this value. So this is definitely lesser than distances earlier. जब -2 से 3 के बीच में आ रहा है, so these distances, some of these distances will be less than in the first case. क्योंकि first case में value क्या आ रहा था? If this was, let us say, equal to p. If this was equal to p, so this value, this sum, this distance was equal to p plus -2 और 3 के बीच का distance क्या है? This distance is equal to 5. This distance is equal to 2, and this distance is equal to 7. है कि नहीं? सो फर्स्ट केस में हमारा डिस्टेंस आ रहा था p, एंड दिस डिस्टेंस हियर, दिस वाज इक्वल टू p plus 5, दिस वाज p plus 5, एंड द लार्जेस्ट डिस्टेंस वाज p plus 7. तो टोटल सम आ रहा था हमारा, दैट वाज 3p plus 12. सो इवन इफ x वाज इक्वल टू -2, हमारा सम मिनिमम तो 12 आता ही आता, जो कि हमने पहले केस में भी काउंट किया. ठीक है, बट सेकंड केस में व्हेन x इज बिटवीन -2 and 3, तो डेफिनेटली सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम -2 and 3 विल बी इक्वल टू 5, और फिर एडिशनल डिस्टेंस हमारा आएगा दिस वैल्यू. सो दिस इज लेसर, दिस इज लेसर. और ऐसे ही हम सेम प्रोसीड करते रहेंगे. लॉजिक क्या है कि जब भी हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, सो ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स विल बी अरेंजिंग ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन, या फिर उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे. और जिस पॉइंट से हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, विच इज लाइंग एज द एट द मीडियन, व्हेन वी आर अरेंजिंग ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स इन अ ascending order, so the point that is lying on the median, which is in this case equal to 3, our minimum value of the distance is at that point, minimum value at the median. अगर मीडियन पे x खड़ा होगा, तब टोटल डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम -2 विल बी दिस वैल्यू, डिस्टेंस फ्रॉम 5 विल बी दिस वैल्यू, एंड डिस्टेंस फ्रॉम 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 3 पे तो खड़ा ही हो. ठीक है, सो -2 डिस्टेंस विल इक्वल टू 5, from distance from 5 will be equal to 2, so total distances का सम आ जाएगा equal to 7, and this will be our minimum value of the function. Okay, एक और एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल fx was equal to mod of x minus 2 plus mod of x minus 3 plus mod of x minus 7 plus mod of x minus 9. So in this case there are four values, four critical points, 2, 3, 7 and 9. So fx is sum of distances from point 2, point 3, point 7 and point 9. 2, 3, 7 and 9. Okay. So again, if x is, अब मीडियन वैल्यूज क्या है जब हम अरेंज कर रहे हैं 2, 3, 7, 9 को? नाउ द मीडियन वैल्यूज आर 3 and 7 आर एट द मिडिल, क्योंकि मीडियन इज एग्जैक्टली बिटवीन 3 and 7. Isn't it so? So 3 and 7 both are median values. So हमारा median in this case will be 3 plus 7 by 2. So distance will be shortest between 3 and 7. Between 3 and 7. So हमारा solution आएगा fx value minimum if x is between 3 and 7. Any value from 3 and 7 हमारा रिजल्ट सेम आएगा. फॉर एग्जाम्पल हम पहले x को खड़ा करते हैं एट 3. तो सम ऑफ डिस्टेंसेस क्या आएगा? डिस्टेंस ऑफ 3 फ्रॉम 2 दैट इज इक्वल टू 1. डिस्टेंस ऑफ 3 फ्रॉम 7 इज इक्वल टू 4, और डिस्टेंस ऑफ 3 फ्रॉम 3 दैट इज इक्वल टू 0, वो तो 0 ही आएगा. और डिस्टेंस ऑफ 3 फ्रॉम 9 दैट इज इक्वल टू 6. तो टोटल वैल्यू आ गया 6 plus 4 plus 0 plus 1 दैट इज इक्वल टू 11. सो एट x इक्वल टू 3, f3 is equal to 11. Similarly, if we calculate at x equal to 7, so if x is standing at 7, so sum of distances क्या आ जाएगा? This will be 2, this is here is 4, 7 पे 0 है, और 2 पे this will be equal to 5. तो 5 plus 4 plus 2, f7 is equal to 11. So at any point between 3 and 7, the fx will be minimum and that value will be constant, which is equal to 11 in this case. क्या ये समझ पा रहे हो? ठीक है, सो हमेशा जब भी हमें ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको ऐसे ही सॉल्व करना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट इज फॉर a greater than b greater than c greater than 0, minimum value of the function fx is equal to mod of x minus a plus mod of x minus b plus mod of x minus c. अब इस केस में क्या किया? a b और c को अननोन कर दिया है. बाकी लॉजिक एग्जैक्टली सेम है कि a b and c all are positive, a is greater than b greater than c greater than 0. Okay, so distance of x from a, b and c has to be minimized, and a is the largest value. ठीक है, पहले आ रहा है 0. 0 से डिस्टेंस नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, बट 0 से
दिया है 0 इज लेस देन सी, दैट इम्प्लाइज सी इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, देन सी इज लेस देन बी एंड देन बी इज लेस देन ए, लार्जेस्ट वैल्यू ए है। ठीक है, सो 0 को कंसिडर नहीं करना है, सी बी ए को कंसिडर करना है, सी बी ए एंड बी इज द मीडियन between C B A. So minimum value will be at when x is equal to b. So if x is equal to b, तो sum of distances क्या आ जाएगा? From distance between b and c, which will be b minus c, and distance between b and a, which will be equal to a minus b, because a is larger, or distance of b from b, which is equal to 0. तो sum कर दो, sum of all these distances. So fx will be equal to, or f of b will be equal to b minus c plus 0 plus a minus b. So b gets cancelled out. This is equal to a minus c. And this will be minimum value. So a minus c is our answer. Okay. Clear है बात? ठीक है. Next question. Given that fx is equal to mod of x plus 2 times mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 plus mod of x minus 4 plus mod of x minus 6 plus 2 times mod of x minus 10 and x is between minus infinity and infinity. So what will be minimum value? Again minimum value पूछा है, but इस बार difference क्या है? Difference ये है कि instead of all coefficients being equal to 1, this is 2 times mod of x minus 1 and 2 times mod of x minus 10. तो इसके लिए कैसे एडजस्टमेंट करेंगे? अगेन हमें प्रोसेस सेम ही रखना है. क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे क्या है? क्रिटिकल पॉइंट्स इज इक्वल टू 0 मॉड ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू 0 हो गया वहाँ पे. ठीक है, यानी कि 0 1 2 4 6 एंड 10 से हमें डिस्टेंसेस अगेन निकालना है. ठीक है, कहानी तो यही है. तो 0 1 2 4 6 and 10, these are the critical points. But frequency of distance from 1 is 2 and frequency of distance from 10, that is also 2. इस बार जब मीडियन निकालेंगे तो वील बी putting all these values in ascending order, but we'll be writing 1 and 10 twice because उनका coefficient equal to 2 है. Basically fx is equal to mod of x plus mod of x minus 1 plus mod of x minus 1, because mod of x minus 1 का coefficient twice है, plus mod of x minus 2 plus mod of x minus 4 plus mod of x minus 6 plus mod of x minus 10 written twice. Okay, so values are 0 1 1 2 4 6 10 10. टोटल वैल्यूज कितने आ गए? 3 4. टोटल वैल्यूज आर 8 8 हैं, तो फोर्थ एंड फिफ्थ वैल्यूज के बीच में मीडियन आएगा अपना. एंड हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ x बिटवीन 2 and 4 our fx will be minimum. fx will be minimum. ओके, ठीक है, फॉर एनी वैल्यू बिटवीन 2 and 4. तो अगर 2 पे हमने देखा, सो f2 विल बी इक्वल टू mod of 2 इज इक्वल टू प्लस 2 टाइम्स mod of 2 minus 1. तो 2 into 1, 2 का डिस्टेंस 1 से, दैट इज इक्वल टू 1. 2 का डिस्टेंस 2 से, दैट इज इक्वल टू 0. 2 का डिस्टेंस 4 से, दैट इज इक्वल टू 2. 2 का डिस्टेंस 6 से, दैट इज इक्वल टू 4. 2 का डिस्टेंस 10 से इज इक्वल टू 8, बट 2 टाइम्स है, तो 2 into 8. तो f2 comes out to be equal to 2 plus 2 4, 4 plus 4 8 plus 2 10 plus 16 26. And this will be our minimum value. f2 भी 26 होगा, f3 भी 26 होगा, f4 भी 26 होगा. Our minimum value of fx will be between 2 and 4. Okay. Next question. Sum of the squares of all the roots of the equation x square plus mod of x plus 4 plus mod of x minus 4 minus 35 equal to 0. Sum of the squares of all the roots of the given equation. Okay. So we have two modulus here, mod of x plus 4 and mod of x minus 4. So critical points are minus 4 and 4. Distance of x from minus 4 plus distance of x from 4. So there will be three cases. First case, when x is less than minus 4. Second case, when x is between minus 4 and 4. And third case, when x is greater than or equal to 4. So we'll be solving for all these three cases. In the first case, when x is less than minus 4, both modules will be opening with a negative sign. So equation हमारा क्या हो जाएगा? x square minus x minus 4 minus x plus 4 minus 35 and that is equal to 0. So x square minus 2x minus 4 plus 4 cancel out, minus 35 equal to 0. Sum हमारा equal to 2 आ रहा है. Sum of the roots is equal to 2 and product is minus 35. 5 into 7 is 35. So x will be equal to sum 2 आ रहा है. So x will equal to 7 and minus 5 will be our roots. Okay. And since हमने assumption लिया है कि x is less than minus 4, so x has to be less than minus 4.
बट 7 इज नॉट लेस देन -4, so this will not be our solution. ठीक है, क्रॉस है, x नहीं है, और -5 will be our solution. ठीक है, so this is acceptable solution, -5, but 7 is not acceptable. Okay, second scenario, when x is between -4 and 4. If x is between -4 and 4, so in that scenario, modulus of x plus 4 will be opening with a positive sign, but mod of x minus 4 will be opening with a negative sign. So x squared plus x plus 4 minus x plus 4 minus 35 equal to 0. X and minus x gets cancelled out. So x square plus 8 minus 35. So x square minus 27 equal to 0. So x square is equal to 27. So x will be equal to plus root 27 and minus root 27. But as per our assumption, x has to be between -4 and 4. But root of 25 क्या होता है? 5 होता है. Root of 27 will be greater than 5. Greater than 5, तो एक पॉइंट हमारा लाई करेगा. ठीक है, हमें चाहिए between -4 and 4. But one point, root of 27 will be larger than 4. And minus root 27 will be smaller than -4. So neither of the points lies between -4 and 4. So both will be not accepted. No point is accepted in this scenario. Second case में हमें कोई भी solution नहीं मिलेगा. Now third case, x is greater than equal to 4. Both mods will be opening with a positive sign. So x squared plus x plus 4 plus x minus 4 minus 35 is equal to 0. So x squared plus 2x minus 35 is equal to 0. Again इस बार sum है -2. तो sum -2 है तो x will be equal to 5 and -7. But x, since has to be greater than equal to 4, so x is equal to -7 will not be accepted, and x is equal to 5 will be accepted. ठीक है, x is equal to 5 will be accepted. So दो ही solutions हमारे accept हुए हैं, x is equal to -5 and 5. These are the solutions. बस हमें चाहिए sum of the squares of the roots, and hence answer will be sum of squares क्या आ जाएगा? -5 square plus 5 square. So 25 plus 25 is equal to 50. So answer in this case will be equal to 5050. Option C. Okay. ठीक है, next question. If a, b and c are three distinct natural numbers, all are less than 100, such that mod of a minus b plus mod of b minus c is equal to mod of c minus a, then maximum possible value of b क्या होगा? Maximum possible value of b, what can be that value? If a, b and c are three distinct natural numbers, so they are integers, positive integers, natural numbers, or all are less than 100. So a, b and c, all of these values are less than 100, and 0 is less than these values, and all are positive integers. Also given mod of a minus b plus mod of b minus c, and this is equal to mod of c minus a. Make distance between a and b and sum of distance between b and c, that is equal to distance between c and a. Distance between a and b and distance of between b and c, that sum up to distance between c and a. So that is only possible, this is only possible when a, b and c all are lying in a straight line. This is basically a triangle inequality. ये जो हमारा inequality, ये जो equality given है, ठीक है, ये एक special case है of triangle inequality. Special case of triangle inequality. As per triangle inequality, our distance between a and b, there are 3 points, so distance between any two pair of points, दो हमने pair ले लिए, so that is always greater than equal to the distance between third pair. And in this case, equality holds when, ठीक है, इन दिस स्पेशल केस हमने क्या किया, पहले दो पेयर्स क्या है, mod of a minus b plus mod of b minus c, यानी कि डिस्टेंस ऑफ b फ्रॉम a एट डिस्टेंस ऑफ b फ्रॉम c. ठीक है, सो दिस इक्वालिटी ओनली होल्ड्स व्हेन b इज between a and c. When b is between a and c. Okay, so in this case, if you draw the number line, since a, b and c are between 0 and 100, so if a is the smallest value, then b, then c, ये काम करेगा, बिकॉज b इज बिटवीन a एंड c. सो अगर b पे हमने पर्सन खड़ा किया तो डिस्टेंस क्या आएगा हमारा, mod of a minus b will be this sum, mod of b minus c will be this sum, and sum of these two will be mod of a minus c. So this will be equal, isn't it? So similarly, second case, this is the first case. Second case क्या हो सकता है, when c is the smallest value, then b, then a, तब भी कहानी सेम होगा. If b पे एक पर्सन खड़ा है तो डिस्टेंस ऑफ mod of a minus b will be this value.
mod of c minus b will be this value, and mod of a minus c will be sum of these. So this is also acceptable. So both solutions are acceptable. The point is that b has to be between a and c. Okay, b must be between a and c. That is the logic. अब क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ b क्या होगा, b कितना मैक्सिमम हो सकता है. सो चाहे पहला केस हो या सेकंड केस हो, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट केस में c इज द मैक्सिमम वैल्यू, c इज द लार्जेस्ट नंबर, सेकंड केस में a इज द लार्जेस्ट नंबर. सो b तो हमारा सेकंड लार्जेस्ट नंबर है. तो लार्जेस्ट नंबर जो हमारा आएगा उसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, बिकॉज all values have to be less than 100. All values have to be less than 100. So in that case, C maximum can be equal to 99 because it has to be less than 100. And since फिर हमारा distinct भी है, ये भी ध्यान देना है कि A, B and C are distinct also. So if they are distinct, तो B cannot be equal to C. So C max can be equal to 99 and B max must be equal to 98, the next number. Isn't it so? और A का maximum value can be equal to 97. अगर क्वेश्चन A के लिए पूछता है तो A can also be equal to 97, maximum 97. बट B के लिए पूछा है तो maximum value of B will be equal to 98 because C maximum can be equal to 99. Similarly, second scenario में देखेंगे तो A maximum can be equal to 99 because this cannot be 100 and by the same logic B maximum will be equal to 98. So irrespective of the cases, B maximum can be equal to 98. Maximum value of B will be equal to 98 only. This will be our answer. क्या ये clear है? ठीक है, यहीं पे अगर डिस्टिंक्ट नहीं होता तो B can also be equal to 99. Okay. Is this clear? So these were all the questions from Modulus in this session. I believe जो भी बातें डिस्कस की सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे. किसी भी क्वेश्चन का डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना. अगर सेशन पसंद है इसको लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से करना है. दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.